Good day and welcome to the Q2 FY2024 results conference call of Sky Gold Limited, hosted by Kiran Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode. There will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Gopal Chandak from Kiran Advisors. Thank you, and over to you, sir. Thank you. On behalf of Kiran Advisors, I welcome you all to Sky Gold Limited Q2 FY24 Concall. From management side, we have Mr. Mangesh Chauhan, Managing Director and Chief Financial Officer, Mr. Darshan Chauhan, Whole-Time Director, Mr. Mahendra Chauhan, Whole-Time Director, Mr. Shivang Goyal, Secretarial Advisor, Mr. Jayesh Sangvi from Finance Team. Now I hand over call to Mr. Mahendra Chauhan. Over to you, sir. Good afternoon. I am Mangesh Chauhan, Managing Director and CFO of Sky Gold Limited. Happy Dhanteras to all of my investors and shareholders and well-wishers. A warm welcome to each of you as we convey the investor conference call for Sky Gold Limited, delivering you to the financial performance of Q2 FY24. Allow me to provide a brief overview of Sky Gold Limited. Since our establishment in 2000, we established it in 2008. We emerged as a leading Mumbai-based jewelry manufacturer, specializing in design, manufacture and marketing of executive gold jewelry. Our forte lies in crafty, lightweight 22-carat jewelry and 18-carat jewelry, featuring an extensive portfolio comprising plain gold jewelry, studded jewelry and Turkish jewelry. With a rich collection of 9 lakhs designs we strive to cater to the diverse taste of our esteemed customers. We are operating on a B2B model. We are a B2B manufacturer. We collaborate with esteemed jewelry retailers such as Malabar Gold, Joy Lucas, Kalyan Jewelers, GRT Jewelers, Senco Gold, along with other large wholesale partners also. This collaboration ensures our products are showcased in more than 2,000 showrooms across India. Notably, 65% of our revenue comes from these customers and 35% of our distributors. Let me delve to the highlights and financials. Let me talk about we are a jewelry solution provider in this jewelry industry. We own the designs. In simple terms, we are an outsourced design manufacturer. We need to keep reinventing ourselves to scale up our business. As listeners, there is a shift from unorganized jewelry retailers to organized players. This shift benefits players like Sky Gold also. The market opportunity is large both in the domestic and export markets. India is gaining share from traditional jewelry manufacturer hubs like Turkey and China. Let's take you to the highlights and financial of Q2 performance. It's an eventual Q2. Sky Gold Limited successfully transmitted to our expansions from 81,000 square feet manufacturing facility now Mumbai from 18,000 square feet. The strategic moves has empowered us to process 750 to 800 kgs per month. We can produce 750 to 800 kgs per month in this facility. Our Q2 performance stands as a testament for our commitment, reflect the domestic financial results. We take pride in the growth of witness in this revenue and profitability. It is a historic good Q2 quarter for our Sky Gold Limited revenue-wise. We had these positive outcomes are the direct result of a heightened professional efficiency. The new facility introduces us opportunity to improve margins, courtesy of state of features, including cutting-edge filtration equipment that minimizes gold loss also during the production process. I will now hand over to Darshan Chauhan, our marketing and sales director. He will explain about the sales strategy and all. Hello, good afternoon to all of you. I am Darshan Chauhan, Whole-Time Director of Sky Gold Limited. I am mainly looking after the sales of the company, domestic and international market. So going ahead, Q2 was really good for us as per the sales view, domestically and internationally also. So slowly we are looking to explore the export market also, because there is a huge lot of demand of Indian jewelry all over the world. So recently I have been visiting to Malaysia market, Singapore market and the Dubai market. So everywhere the Indian jewelry demand is going good.
And as it is, Indian market is really very strong. As there are the festive seasons is coming on ahead in this Q3 and Q4 quarter. So festive seasons and wedding seasons will add on to our sales and revenue. And we are ready with all kinds of products. We are exploring different products also, from lightweight to the wedding collection also. So there is a mixed range of our products and diversified products as per the state and region, each and every state and every region in the country. So we are mainly focusing on the traditional base, the regional base, and the taste of the customer to give them the best output. And with the best production facility available with us and good labor and machinery, we can thoroughly take this opportunity to expand our sales domestically and internationally. International market also, there is a very good demand for lightweight jewelry, what we are producing right now. So we had explored that market also. So slowly going ahead in 2-3 years, we'll focus more on the export segment also. So that will help us build up the revenue of the company more. Okay. And we are dealing with all the good corporates, big corporate houses for bulk manufacturing. So we are giving them good services and good products. So we are getting good response from that. So overall, the sales strategy is to focus mainly on the domestic market and slowly explore the export market also. And we are adding whatever good clients are there in the market, south market, north market. We are adding good clients also. So there are very new clients to explore in domestically also and in export market also. So going ahead with this new manufacturing facility, we'll do good product mix also. We have a large design bank with us, so we can explore a number of clients with us. So looking ahead, good Q3 and Q4 quarters. Thank you. Thanks a lot. I will hand over to my Mahendra Chauhan, the whole-time director, regarding the further activities. Okay. Hello everyone and good afternoon to all. I am Mahendra Chauhan, the whole-time director of Sky Gold Limited. This is the first time I'm interacting with investors and shareholders. Let me mention that we are God-fearing people with complete transparency and welcome if any constructive feedback. I am taking care of all designs. At this point of time, we are catering to fine jewelry, and even within fine jewelry, we are present in plain gold jewelry, seated studded jewelry, pearl jewelry, kid jewelry, and different types of segments. And there is a lot of opportunity to expand beyond fine jewelry as well also. We would be getting categories like wedding jewelry, rose gold jewelry, watches collection, teenage collection, more in this facility. We have shifted our facility during Navratri, and we have totally 300 people in our old facility. Now we have the number of count is 450 workers, and the total capacity would be more 900 to 1,000 people. Our focus here is to reduce the gold loss and improve the quality of manufacturing with the new machines. We are confident about the target. Thank you all. So this was our directors. One of the directors are looking over the sales and manufacturing. One of our Mahendra Chauhan is looking over the designing and development of the products and machineries and all. So I will summarize all these things. I would like to speak in Hindi also, our मातृभाषा. So basically हम लोग एक डिजाइन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो कॉर्पोरेट्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, डिजाइनिंग बनाते हैं, जो हैंडमेड और मशीन मेड का जो कॉम्बिनेशन है, मशीन में मशीनरी ज्वेलरी बनती है, उसके बाद उसको हाथ से फिनिशिंग, पॉलिशिंग और फाइलिंग सारा होता है. तो ये एक हमारा डिजाइन बेस जो हमारा मेन कोर है, जो डिजाइन हम लोग डेवलप करते हैं प्रमोटर मिलके, जो ग्लोबल में डिजाइन होता है, जो इंडिया में ग्लोबली जो चल रहा है, जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट वो इंडिया में बहुत सारे एक्सेप्टेंस नहीं होते, ज़्यादा वेस्टर्नाइज होता है, उसको इंडियन टेस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. जो हमारे 50 से 70 की टीम है डिजाइनिंग की, जो हमने 18 साल में डिजाइनर चुन के हमने हमारे पास एक्यूमुलेट की है. ऑल ओवर इंडिया से, टर्की से, दुबई से डिजाइनर है हमारे पास, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के डिजाइन बनाते हैं. ये हमारा मेन कोर है. तो डिजाइनिंग पार्ट इज अवर मेन. क्वालिटी वाइज हम लोग ने जो मशीनरीज अभी जो जर्मन इटालियन मशीनरी इंस्टॉल कैपेक्स की है न्यू फैसिलिटीज में, जो 80,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी है, जो महाराष्ट्र की कास्टिंग ज्वेलरी में नंबर 1 है. तो बेस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग विथ लोएस्ट कॉस्ट, ये हमारा टारगेट है आगे के लिए. और वी आर टारगेटिंग फोकसिंग ऑन B2B स्पेस, रिटर्न ऑन कैपिटल अपॉर्चुनिटी. मतलब वी एस्पायर दैट 20 to 25% रिटर्न हमारे कैपिटल पे आना चाहिए. हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन है विद इम्प्रूवमेंट विद क्वालिटी एंड हायर शेयर ऑफ कॉर्पोरेट.
वी कैन इम्प्रूव हम लोग हमारी इन्वेंट्री टर्न अराउंड जो है उसको हम लोग अभी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। जो 45 डेज का है चर्निंग उसको 30 डेज पे लाने वाले हैं 5 to 6 क्वार्टर्स में, जो हमारे वर्किंग साइकिल कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। तो वी टारगेट आवर रिसीवेबल्स फ्रॉम 30 डेज to 15 डेज पे भी आ जाए, वो इन्वेंट्री डेज कम हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे ऑपरेशंस है 5000 करोड़ तक की कैपेसिटी है हमारे ऑपरेशंस में, जो हम टारगेट कर रहे हैं कि 2 से 2.5 साल में इसको अचीव कर ले। और पैट मार्जिन भी हम लोग 3 to 3.5% मार्जिन के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जो हम ये नई फैसिलिटी हमको हेल्प करेगी अचीव करने के लिए, जिसमें हमारी हाईटेक मशीनरीज विल हेल्प ऑल्सो हेल्प। और जो एम्प्लॉयज हमने नए हाईटेक हायर किए, नए डिजाइनर हायर किए, उससे हमारा नया प्रोडक्ट जो मोनोपोली प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, it will help us to grow and take this to our target of achieving 5,000 crore revenue with a good profit and PAT margins. This is our summary. We all promoters are together, we brothers are together to take this journey ahead and achieve the targets of our company. So let us take the questions of the shareholders and investors, whatever they have, and we can answer them. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Harsh Shah from Dimensional Securities. Please go ahead. Hi, sir. Good afternoon. Congratulations on great set. Sir, sorry to interrupt, but the volume on your line is very low. I request you to please speak closer to the mic and use the handset. Is this better? This is much better, sir. Please go ahead. Yeah, hi. Good afternoon and congratulations for great sets of numbers. My first question is on the debt and the investment on our book. So our debt has increased to around 180 crore. But if I see, we also have investments in certain shares. We are holding HDFC and TCS shares on our balance sheet. So just wanted to ask, why is the management not selling off these shares? Because these are not core activity of our business. So why don't we sell off these shares of 75 crore and pay off the debt that we have? Good morning, Ashway. So we had the shares before for 3-4 years, 5 years back, and we gave them as a collateral to the bank to take the facility of CC limits. That time we have the demand of cash in our company, so we took the debt from the company. So it is the valuation is of 40 crore is got up to 70 crore. So now we have taken a round of preferential round of 100 crore. We will be receiving the funds by 20th November, and we will be start planning to take this some care of some debt and sell off this security also. So it was the need of 4-5 years back of need of the company. So we pledged the shares to the bank and take the limit and got our work done. So we were in need of the capital. So now we have completed our preferential round of 108 crore. Company will have the funds, huge fund in our accounts, and we will do the as and when required. We'll do the needful, and this is a good suggestion. It was a need of 4-5 years back. Now it's not needed to take much debt from the bank. So we are planning to square up some debt also and sell the security also. Great. That's great to hear. And on inventory part, so currently we have inventory of 100 crore on our book. I believe the nature of our business is such that we should not be needing much of the inventory. Just wanted to understand why we have this inventory of 100 crores. I will tell you the major inventory is in work in progress. So we have 500 employees. Out of that, 250 to 300 employees are working in making the gold. So day in day out, every worker in hand they have 200 to 500 of gold to manufacture. So to manufacture them. So we need to hold. This is a manufacturing process. We process that daily process. It takes 7 to 8 days to
ready the jewelry and dispatch to the customers. So work in progress inventory is any time of 60, 70, 20, 25 crore inventory, ready inventory is there with us to show the new products to the customer, new clients, new corporates which are going to be added to us. We are targeting India's largest one or two leading retail channel stores. So we need to make some new inventory, new items and all. So other than that, 75% of work in progress, which is needed to produce the jewelry. So it's in their process. New gold comes, it gets into the production unit. Some are ready and it get delivered. So this inventory is for just work in progress. So it daily gets dispatched, daily new gold comes and it gets into the manufacturing. I hope you are getting. Understood. Yes, I certainly got it. And as you spoke about leading retailers, I just wanted to get an update on where we are in terms of our potential tie with Tanishq. If you can give some update on that. I will not name any jeweler, but we are in talks with topmost two jewelers, retail jewelry channel stores, and we are hoping that we'll acquire them in these 2 quarters. So let's hope we have the facility as per the measures and all the norms which they look for. That facility should be there. We have facility for our employees of saloon facility, gymnasium, recreation, all the facility we have created here for our employees. So this type of corporate looks this type of facility which the promoter are taking care of the employee. Environment is good for the employees to work. Everything is provided to them from food to safety, security, medicals. We have kept a permanent doctors for the medical checkup and all for the employees, for first aid. So this type of facility is really unique in Maharashtra, which we own. So this is a winning point for us that corporates will attract this. And let's see, we are in talks with major 2 retail channel stores, and we are targeting them. Yes. Okay. And last question is on the margin side. So Q1, we were at around almost 5%, which has come down to 3.85%. So just wanted to understand, is there any impact of seasonality, and what would be the sustainable margin for FY24 and going ahead? ये Q1 से Q2 क्वार्टर में हम लोगों ने अगस्त में हमने हमारी जो 25,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी थी, इससे हम 80,000 स्क्वायर फीट में शिफ्ट हुए. तो उसमें 5 से 6 डेज हमारा फैसिलिटी भी क्लोज था, और जो एक्सपेंसेस हमारे नई फैसिलिटी में आने के बाद जो बड़े हैं, जो सिक्योरिटी चार्जेस, ऑल दिस थिंग्स, रेंट एंड ऑल, तो उसको फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए ये 2 क्वार्टर अभी हमारे लिए बहुत अच्छे हम लोग यूज कर रहे हैं. अवर मार्जिन, अवर जयेश भाई, अवर let me explain. Majorly there is an increase in the other expenses and employee cost and depreciation. All of this is because of the shift to the new facility. Some of these are one-time expenses incurred for the purpose of shifting. Some of them are increase in the fixed cost because we have moved to a larger unit. So all of that impact has come in the current quarter, because for short time the production was not there. For short time there was simultaneous work going on in both the places. As regards the guidance for margin, this looks to be, as in the next few quarters, look to be good only, because as the quantum increases in this facility, the fixed cost will get absorbed better, and the margins are likely to improve. Great. That's very heartening to listen. And congratulations to all of you. Shubh Deepavali and Shubh Dhanteras. Thank you. Happy Dhanteras to you also. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Pritesh Chedda from Lucky Investment Managers Private Limited. Please go ahead. Yes, sir. Sir, your balance sheet turn was 4.5x until last year, when you did 1,100 crores of revenue on 250 crore of balance sheet. When I look at the balance sheet, largely all working capital at a 3% margin. Now, what you're mentioning in the call is working capital reduction further, and margin, whatever is the last 2 quarters, is a higher margin. So, what will drive this shift from 4x or a 4.5x balance sheet turn, 4.5 working capital turn, whichever you want to put it? We are looking for the customers. They are for the cash and carry business.
like large corporates, they give their own bullion to us, own gold to us. So we need not to fund our inventory from our side. So these large corporates give a gold from their side. We have to just manufacture from them and deliver them, and we can create a labor. So we are into it. Our receivables are going down. We are taking that receivables to down by improving our standing facility. When now production time is 8 days, we are targeting in this new facility to take to 5 days. Our debtors we are trying to give minimum credit, reducing our credit. So this will take us to increase our working cycle capital. So okay. Chintan Bhai, Jayesh Bhai also will also. Yeah. So these are the methods being employed to reduce our working capital investment and bring in more efficiencies, whereas on a per kg or a per gram basis, the conversion cost or the labor income that is there remains the same, whereas at a lower capital requirement. Okay. So until last year, when you were doing 65% of your business with organized retailer and 35% wholesale, yeah, you did not have clients which are doing business on cash and carry by giving gold to you? Already we are doing with the corporates. We are doing by our inventory. Right now we don't have only one or two big larger corporate only in India gives their gold to manufacturers. Okay. Other corporates of 20 corporate, other 16 to 17 corporate which we have in our bucket of, they take by our inventory only. They don't give. Okay. They have their policies, but we are targeting like those corporate. Then they will give us bullion, and we can make labor, use labor from them. So this will help to take production high also and utilize the maximum facility. So we are targeting to reduce our debt, finance costs also by taking some measures. It will help in this 2 quarters. Okay. Which means that until last year it was a model which was a fully used or utilized model on this 4.5 time inventory turn. Yeah. If you had customers which were not giving you gold, then the model is what we see in the last year, which is basically some 3.5-4% margin at EBITDA with 4.5 inventory turns, right? No. We are not taking in consideration of this large corporate. Whenever they come, they are welcome, and it will add up to our balance sheet. We are just considering our existing customer. They are on the board. So we, like example, Joy, we were giving them credit of 30 days. Now they are converted to the cash payment. We have requested. We have given some deals to them, and they are converted into cash and carry business. So we are converting our existing customers. So those who are on 20 days, we are taking them to 10 days. Those who are on 15 days, we are then taking them to the cash and carry. How we'll take them is our inventory. We are making new monopoly products, exclusive products which are not available in the market with other suppliers or manufacturers who cannot make this till 1.5 years, 2 years. They cannot copy also then. So for this type of line of products, they are convinced to give us the payments fast. And the rotation is so we are not relying on that huge corporates that will come on board. That will be additional to our balance sheet. But we are looking for our existing customers, changing them to the credit time, to lower the credit time, improve our manufacturing facility from 8 days to 4 days to produce a product and all. So these are the measures, taking the measures to reduce our finance cost. Now preferential round also is over, so we have a huge fund, so we will not be needed so much huge fund. So as and when measures will be taken to improve our quarters. Okay. Just last question here. Suppose just keeping that new customer which is to come, we keep that aside. But with the existing customer, this 4.5 balance sheet turn, or let's say some 70-80 days of working capital, 70 days of working capital that we keep in the system. Yeah. This can be reduced by how much? 15 days, 20 days, let's say the existing customer only. And can you scale up this new facility that you have put from 18,000 to 80,000, which means that you could have earlier done about 150 kg, now you can do 750 kg. Yeah. Can you do it with the existing customer? So my first question is, how much can you increase the balance sheet turn with the existing customer only?
And how much more can you sell to the existing customer, keeping that new customer whenever he comes aside in the conversation? Yeah. We can right now we were making 200 to 250 kgs per month. So from existing customer, we can go up to 500 kgs anytime, because as you give the example, last quarter Tanishq announced 83 stores. Malabar Gold, our existing client, announced 85 stores in this quarter. Joya Lucas announced 40 stores. Kalyan Jewellers opened 60 store in last 2 months. So this existing client only, they are expanding their store. तो ये जो हमारे जो कॉर्पोरेट्स है, जो इनके ही स्टोर इतना एक्सपांड हो रहे हैं, इंटरनली इनका कंपटीशन चल रहा है. जैसे सेंको गोल्ड ने अभी 30 स्टोर ओपन किए. दिस इज आल्सो आवर क्लाइंट, दे आर आल्सो लिस्टेड. थंगामाइल इज आवर क्लाइंट. So they are drastically expanding their store because they have good funds and they are good revenue response is good in their stores. So ये जो customers already हमारे पास corporates है, इनके ही store बहुत drastically open हो रहे हैं. और इन्होंने ही हमको मतलब already when हम लोग जब जूनी facility में थे, old facility में थे, तो इन्होंने हमको बताया था कि please मंगेश जी expand your facility, be ready, but we are expanding drastically in next 2 years. तो इनके कन्वर्सेशन पे ही हम लोग कोई भी फैसिलिटी, ये हमने जो एक्सिस्टिंग कस्टमर नहीं है उसके ऊपर हमने नहीं बनाई है. ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो कस्टमर है उसके ऊपर ही हम लोग 500 kgs तक ऑलरेडी जा सकते हैं 1 साल में या 1.25 साल में, 1.5 साल में, जो इनका कमिटमेंट है. और जैसे जैसे इनके स्टोर बढ़ रहे, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर जो है इतनी हाईटेक मशीनरी के साथ, इतने सारे हाईटेक स्किल्ड एम्प्लॉयज के साथ, जो यूनिक डिजाइनर्स के साथ, जो प्रमोटर्स भी डेडिकेटेड है पूरे कंपनी के अंदर, एक डिजाइनिंग के अंदर डेडिकेटेड, एक सेल्स के अंदर है, एक फाइनेंस और मैनेजमेंट में. तो दे आर लुकिंग फॉर लाइक दिस मैन्युफैक्चरर के इनके साथ जुड़े रहना है और इनको बैक टू बैक ऑर्डर देना है. तो हमारा जो ये जो टारगेट अचीव करना है प्रॉफिट वाइज या रेवेन्यू वाइज, इसका प्लस मेन पॉइंट जो है, जो हम प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, जैसे मलबार गोल्ड में या किसी भी कॉर्पोरेट में, जैसे 10,000 प्रोडक्ट हमने दिए उनको, तो दे सी दैट ये 8,000 इन्वेंट्री इनकी 15 दिन में ही बिक चुकी है, बाकी के 2,000 इन्वेंट्री बाकी के 15 दिन में बिकी है. तो दे आर वेरी फास्ट सेलिंग मैन्युफैक्चरर. सो दे हैव द सॉफ्टवेयर ऑल ओवर कॉर्पोरेटिव सॉफ्टवेयर है कि स्काई गोल्ड का प्रोडक्ट इतना आया, इतना फास्ट सेलिंग है. सो दे रिफिल अस एंड बैक टू बैक और भी ऑर्डर्स वो लोग हमको देते रहते हैं और भी प्रोविजन करते रहते हैं कि भी अगले क्वार्टर में और भी हमको क्वांटिटी लगेगी. तो ये जो हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हमारी इन्वेंट्री जो 5 से 50,000 की इन्वेंट्री जो हमने बनाई है, वी डोंट डील इन 2 लाख 3 लाख 4 लाख इन्वेंट्री जो सीजनल है या ज्यादा सीजनल है या ज्यादा वेडिंग सीजन में ही बिकती है. ये जो हमारी इन्वेंट्री हमने बनाई है मॉडल है, यंग एज में भी चलती है, मिडिल एज में भी चलती है. फिर बजट वाइज भी हमने 5 से 50,000 की इन्वेंट्री बनाई है, जो ओन फंड से भी ले सकता है. कोई सर्विस क्लास है, कोई एम्प्लॉय है तो उसको अगर ईएमआई पे लेना है तो वो भी स्टोर से ले सकता है. एक बजटेड इन्वेंट्री है जो एवरी टाइम चलती है, गिफ्टिंग में भी चलती है, ओकेजन्स में भी चलती है, वेडिंग में भी चलती है. तो ये हमारा कोर है. तो ये जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही है, इसका पोटेंशियल ही बहुत ज्यादा हो रहा है. जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो मार्केट शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज की तरफ, ये सब मार्केट हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर भी उससे बेनिफिट होता है. मैन्युफैक्चरिंग में भी बिजनेस शिफ्ट हो रहा है. जो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चर जो अभी मार्केट में अवेलेबल बंगाली कारीगर है या कोई छोटे छोटे कारखाने हैं, उनसे वो लोग ये कॉर्पोरेट दे हेजिटेट, दे डोंट ओपन अकाउंट ऑफ देम बिकॉज दे डोंट वांट टू डील विद देम बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंस वाइज एंड नॉट दैट ऑल. सो ये सारी जो चीजें हैं ये हमको लेके जाएगी हमारी टारगेट की तरफ. अगर नई लार्ज कॉर्पोरेट्स आते हैं तो वी हैव कैपेसिटी ऑफ 750 to 800 crores, so we can accumulate them also. So we had made the provision for both. Existing customer का भी ऑर्डर नहीं रुकना चाहिए, उनको भी साथ एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग विद देम 20-30% विद एवरी कॉर्पोरेट. तो ये भी हमको एक्यूमुलेट करना है. और नए जो कॉर्पोरेट हम लोग अभी ओवरसीज में भी, सिंगापुर मलेशिया में भी अभी दर्शन भाई गए थे, उनके भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, दुबई से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, और डोमेस्टिक्स में भी जो नए लार्ज कॉर्पोरेट है उनसे भी हमारे. तो वी कैन टारगेट दिस विद 500 kgs तक. तो हम लोग एक्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ही हम लोग ये 1-1.5 साल में टारगेट कर सकते हैं. ओके. एंड दैट वर्किंग कैपिटल सर, जो ये कस्टमर के साथ कितने दिन से घट जाएगा? So 60-70 days is what you're operating now, 4.5 time balance sheet turn. Yeah. तो वो कितना घटेगा? We are targeting that to 35 to 40 days. Taking that to 45 days. जो अभी जो फैसिलिटी आई है, जो पहले हमारी फैसिलिटी, उसमें बहुत सारा डिफरेंस आया है काम करने की. कारीगर के लिए एम्प्लॉइज जो नए हायर कर रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स बन रही है, और फास्ट मेकिंग जो मशीन हमने कैपेक्स किया था, तो मशीनरीज जो अभी लाए उसके अंदर हमारा डेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रहा है. और जो कॉर्पोरेट से हम लोग डील कर रहे थे उसमें हमारा
चर्निंग भी फास्ट हो रहा है, फास्ट दे आर गिविंग द पेमेंट ऑल्सो फास्ट. तो मेरा टारगेट है कि 3-4 क्वार्टर में ये सारा हमारा साइकिल भी कम हो जाएगा एंड प्रोफेशन का अमाउंट भी आ रहा है, तो फाइनेंस कॉस्ट भी हमारा कम होगा. तो दिस और जो सारा सिनेरियो जो फैसिलिटी अभी आई है और करेक्ट टाइम पे हमारा प्रोफेशनल राउंड भी हुआ है. So this all scenario is good, positive vibes to go ahead. So you'll operate at 6% GP and 4.5% margin? क्योंकि आपका GP रेंज जो है वो बहुत वेरिएट करता है, तो आप एक GP रेंज दे देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेंज या वैल्यू एडिशन जो भी आप बोलते हैं, और मार्जिन का रेंज. हम लोग ऑपरेशन मार्जिन में तो हम लोग टारगेट करेंगे ईयर ऑन ईयर कैपिटल पे जो 20-25% जनरेट होना चाहिए हमारे कैपिटल पे, वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और ग्रॉस मार्जिन विल ऑल्सो इम्प्रूव बिकॉज जो अभी हम लोगों ने जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए ये 2 क्वार्टर में यू विल सी द रिजल्ट्स एंड ऑल फ्रूट्स ऑफ दैट. तो ग्रॉस मार्जिन विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड बीटा विल ऑल्सो इम्प्रूव. बेसिकली हमारा कॉन्सेंट्रेशन है कि रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होना चाहिए जो 25-30% तक भी जाए. तो लेट्स सी, फैसिलिटी इज गुड, क्लाइंट्स आर ऑन बोर्ड. चैलेंज सेल्स वाइज कोई चैलेंज नहीं क्योंकि सारे कॉर्पोरेट्स अपने ऑन बोर्ड है, इंडिया के जो भी लार्जेस्ट है 1-2 को छोड़ के. तो सेल्स वाइज इज ऑल्सो गुड. नए नए प्रोडक्ट्स के साथ हमने उनसे लॉन्च भी कर दिए हैं जिसमें मार्जिन क्रिएट हो रहा है हमारा. तो थोड़ा ग्रॉस मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, एबिटा भी इट विल बी आउटस्टैंडिंग आई थिंक. ठीक है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. In order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your questions to 2 questions per participant. The next question is from the line of Hasmukh Visharia from SUD Life. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. I have one question on how you are, let's say, trying to build your sales team or corporate team to get to, let's say, 5,000 crore sort of a turnover. And similar to that, let's say when you say customers like Tanishq or let's say probably Reliance Jewellers, etc., then how do we, let's say, approach for any new customer, or how the whole, let's say, transaction happens? If you can highlight, throw some light on that. So, I will not name anybody, but इंडिया के जो लार्जेस्ट रिटेल चैनल स्टोर्स है अभी, उनसे हमारा सारा अच्छा ट्रांजेक्शन चल रहा है. उनके लिए प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले हमने किए हैं सारे. सो ये हमारे जो हम लोग क्वार्टरली एग्जीबिशन करते हैं, एवरी क्वार्टर वी डू एग्जीबिशन. DJPC जेमिन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो हमारी बॉडी है ज्वेलरी इंडस्ट्री की, सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री की मेन बॉडी है जो इंटरेक्ट करती है इंटरनेशनल भी, गवर्नमेंट से भी सारा. तो इनके जो एग्जीबिशन होते हैं क्वार्टरली, मुंबई में भी, बैंगलोर में भी, तो एवरी क्वार्टर में हम लोग एग्जीबिशन करते हैं जिसमें हमारा बहुत लार्जेस्ट स्टॉल होता है. सारे न्यू प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे. सारे इंटरनेशनल बायर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया के जो बायर है, मे बी एनी कॉर्पोरेट, दे ऑल विजिट दैट एग्जीबिशन बिकॉज इट इज द वर्ल्ड सेकंड नंबर एग्जीबिशन इन अगस्त इट हैपेंस. तो एवरी क्वार्टर जो हमारा एग्जीबिशन होता है इसमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं. जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी आते हैं, उनके परचेस मैनेजर आते हैं, उनके बॉसेस आते हैं. तो वो हमारे को नया ऑर्डर्स के लाइन अप करते हैं, नए प्रोडक्ट्स देखते हैं. और जो क्लाइंट हमको एक्वायर करने हैं, जो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट है, वो भी एवरी एग्जीबिशन में आते हैं. टेक द नोट ऑफ आवर प्रोडक्ट, आवर प्राइसिंग एंड ऑल, आवर दे विजिट आवर फैसिलिटी, क्या इनकी कैपेसिटी है, क्या इनके नॉर्म्स है. तो दे हैव डन ऑल दिस थिंग. सो लेट्स सी, ये सारे एग्जीबिशन से हम लोग क्लाइंट एक्वायर करते हैं. आज जो कॉर्पोरेट 10 स्टोर या 12 स्टोर पे काम कर रहे हैं, हम वी आर लुकिंग के ये आगे के मलबार गोल्ड या कल्याण ज्वेलर्स है, आगे के 100-200 स्टोर ये करने वाले, तो उनको भी हम लोग एक्वायर कर रहे हैं. जैसे लास्ट एग्जीबिशन में भी हमने एक दो कॉर्पोरेट एक्वायर किए थे, 10-11 स्टोर है उनके. सो दे आर नॉट ए स्मॉल कस्टमर फॉर अस. वी आर सीइंग देम एज ए लार्ज कस्टमर इन फ्यूचर. इन 2-3 साल में दे विल एड अप टू अस. Every year they will add because they are also introducing 1-2 store every month. So this corporate introduce 25-30 store in every month. They introduce 1 or 2 store. So ये मिक्स एंड मैच है. हम लोग छोटे कॉर्पोरेट्स, मिड कॉर्पोरेट्स को भी एक्वायर कर रहे हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी एक्वायर कर रहे हैं. तो एग्जीबिशन इज आवर मेन पार्ट टू डिस्प्ले आवर प्रोडक्ट, शो आवर प्रोडक्ट्स, एंड दे ऑल फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड दे कम देयर. So we can achieve this target from this line of business from our existing client also, and adding new clients.
Understood. And any thoughts on how you, let's say, build your sales team or corporate team to get to 5,000 crores sort of a turnover in next 2.5 years? I already answered this, that my sales teams and my main director, Darshan Chauhan, who has the expertise of sales and marketing over last 15 to 18 years. So they are into it. हमारा प्रोसेस ही एग्जीबिशन में जाके एग्जिबिट करना है एंड आवर प्रोडक्ट स्पीक्स. मार्केटिंग में ज़्यादा एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो हमारा होता नहीं है, बिकॉज ये एग्जीबिशन का एक्सपेंसेस वही है. वी नॉट नीड टू एक्सपेंड मच ऑन मार्केटिंग. कोई मार्केटिंग हमको ज़्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि दिस कॉर्पोरेट लुक्स कम टू लुक. सामने से हमारे मैन्युफैक्चर को देखने आते हैं कि कौन मैन्युफैक्चर बड़ा है, किसकी डिजाइनिंग बेस्ट है. So their purchasers keeps on looking for this type of making. We have to just improve our products, quality products. Designing should be very powerful, and game is ours. Understood. Thanks for that. That's it from my side. Thank you. The next question is from the line of Raj Sanghvi from an individual investor. Sorry. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. Am I audible? Yeah, tell me, sir. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon. Congratulations on a very good set of numbers. So wanted to understand one thing from the export side. I think previously जब बात हुई थी तो in export I think we were exporting to our existing clients के overseas stores. I think Kalyan Jewellers and Senko and Malabar. So this time have we acquired new clients which are altogether different from the existing ones? Yeah, we have acquired one or two new big clients also. Like in Dubai also we have 130 stores. The corporate, I will not name the customer, but we have 130 stores in Dubai and Gulf. So one of the large corporate after the Damas Jewelry. So we have acquired that customer. Last month only we started the business with them. So now Darshan Bhai also visited Singapore, Malaysia. That also we will be delivering them products in next month. So we have acquired some new clients after coming. Existing customer already we are giving them. Yeah. Okay. Perfect. That sounds great. The second thing, I mean, we are focusing mostly on the lightweight jewelry, which is sub par 50,000 jewelry. So, wanted to understand one thing, maybe a few months or few quarters down the line, can we think of scaling? Hello? Yeah. Tell me. Yeah. So can we think of scaling up this to mid-size jewelry, let's say 2 lakh or 3 lakh jewelry, since we already have the existing clients and existing relationship with this client, so it will be easier for us to, get those kind of jewelry also on board along with the lightweight jewelry. हमारा frankly speaking हमारा विजन वो थोड़ा नहीं है. We can test it, but हमारा विजन वो नहीं है कि डे बाय डे हम जो देख रहे हैं मार्केट में जो हेवी यंगस्टर्स जो आ रहे हैं या मिड एज जो आ रहे हैं वो एकदम हेवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते. हाँ, उसकी खुद की वेडिंग है, उस दिन वो पहन लेते. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर. Can you hear me? Yeah, you're audible. Please continue, sir. ये जो ज्वेलरी जो 5 to 50,000, maybe we go to 60-75,000, but 3 लाख 4 लाख या 2 लाख की इन्वेंट्री हमारा बनाने का माइंडसेट अभी नहीं है, because it takes time to sell, it takes time to produce also, and इसका चर्निंग साइकिल भी वेरी स्लो है. रिटेल में भी बिकने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक लग्जरी कस्टमर लेके जाता है जो ओकेजनली आता है. तो कॉर्पोरेट हमेशा हम लोग वी वांट टू बी इन मार्केट ऑफ द मेन हार्ट ऑफ द मार्केट, जो ब्रेड एंड बटर है मार्केट का. मतलब जो ज्वेलरी तो हमारी लग्जरी है ही है, लेकिन जो एवरी कस्टमर कैन बाय, जो सीजनल भी बिकता है, दिवाली नवरात्रि में भी, वेडिंग में भी बिकता है, डे टू डे गिफ्टिंग में भी बिकता है, वैलेंटाइन में भी बिकता है, बर्थडेज में भी बिकता है. तो फ्यूचर में हम जो मार्केट देख रहे हैं यहाँ से 2 से 5 साल में जो यंगस्टर्स नए आ रहे हैं, जो आज जो 19 साल के 20 साल के जो आज 2-3 साल के बाद ज्वेलरी खरीदने वाले, उनका माइंडसेट जो है वो हैवी ज्वेलरी पे नहीं है. लाइट वेट ज्वेलरी 2-3-4 मल्टीपल में वो ले लेंगे. जैसे 50,000 या 40,000 की ज्वेलरी है तो 3-4 पीस ले लेंगे, लेकिन हैवी ज्वेलरी पे हमारा थोड़ा फोकस नहीं है. और हमारी R&D जो दिख रही है वो इस पे हमको जाने के लिए सूट नहीं कर रहा है. Right, sir. That makes sense. One last question. I mean, I understand that we have taken a bank loan in cash. So, metal loan is also available with quite a bank, and I think interest rate is a bit lower. So, is that option we can consider in future? Yes, correct. This quarter only we started exploring the metal gold loan. 5-6 साल पहले लोगों ने ये सीसी लिमिट ली थी. उस टाइम पे हमारे पास इतना कैश नहीं था, because we have to keep cash component to pay the M2M every day in the out of this GML loan.
So now we have completed the preferential of the heavy cash is there in our company will be coming. So we are shifting this our loan to GML slowly. It will earlier अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दिया था, फाइनेंस कॉस्ट हम लोग रिड्यूस करने पे ड्रास्टिकली सोच रहे हैं. तो ये 2 क्वार्टर में अपना फाइनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस करेंगे. GML दिस इज ऑल्सो गुड एडवाइस. ऑलरेडी हम लोग ये इस पे वर्क कर रहे हैं. ये टाइम परफेक्ट है हमारे लिए गोल्ड लोन में जाने के लिए. Perfect. Thank you, sir. I'll get back in line for another question. Perfect. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Mihika Joshi from Vimana Capital. Please go ahead. Hello. Hi. Am I audible? Tell me, ma'am. Good morning, ma'am. Tell me. Hi. So I just wanted to understand that you had a B2C setup in the US, right? So are there any updates on that? No, we are looking, not drastically looking after that, but we are some planning is going on. But there is no, we are not sold anything from that inventory, that subsidiary. So we are just many orders. Domestic market में इतना demand है, बहुत ज़्यादा scope है B2B में. So we are just now focusing only on B2B, on manufacturing, because जो product हमने launch किए अभी, उसका बहुत सारा orders है. और वी आर इनटू कोपिंग अप ब्रांड एंड ज़्यादा फोकस हमारा अभी B2B पे ही है. सो वी आर ओके. एंड जो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, एंड जो पहले B2C जो था उसका फिर क्या हो गया, मतलब subsidiary is there. We are planning on the back end what to do. Launch a new product in next 2-3 quarters. We'll explore that market. What is the potential in that? Right now we are not looking after that. Okay. So yeah. Okay. And what about B2C plans in India? Is that also something that you're not considering as of now? As of now, we have something in mind, but not we are not aggressively going for B2C from in these 2-3-4 quarters, because we have unexpected growth in B2B only, in manufacturing only. As the corporates are growing, new corporates are coming, new channel stores are coming. So we are seeing a tremendous growth and expansion in this vertical only. So we have a very huge scope in this. So we are right now concentrating into B2B only, manufacturing only. We are not considering B2C right now. Okay, all right. That's it from me. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Varun from EVK Limited. Please go ahead. Hi. Thanks for taking my question. First, if you can let me know about quarter on quarter volume numbers. What was our volume versus in this quarter versus previous quarter? I think I have given the numbers. We have flashed the numbers already on the exchanges, and you must have got the balance sheets and all. So let me know if you have any questions. Okay, maybe I've missed that in your volume. Mangesh is asking how many kgs have we processed in this quarter versus last quarter? How many kilo? Okay, kgs wise. Okay. I have to get back with the figures. You can mail me. I would say send you. Right now I've not taken that number of kg wise, but all rupees wise and all you have. So get back and you can drop us a mail. So right now I don't have that numbers. Yeah. So other than debt reduction, sir, any other plan for utilizing the preferential money which you will be getting? I mean, one is the debt reduction. Any other plans? I mean, you already have the capacity. It's more like a debt reduction in working capital, or anything else also you are planning for it? No, we are just using the capital to, major capital will be used in working capital. Some of the part will be used to reduce the debt, but major for working capital, so we can introduce new products, new jewelry. We are targeting now Gulf market, Singapore, Malaysia market is open for us. So they will be giving huge orders we are expecting in these 2 quarters. So we have to process that order also. So we'll be needing the inventory, the working capital for that. Raw material will be needed to achieve this goal and acquire these customers and grow with them. So we right now we don't have any plan to use this capital. We will be using this capital for the major capital will be used for working capital only, and to invent new design, R&D new designs and launch new designs and take the orders from the client. Okay.
In the previous call, you mentioned that you were using approximately 200 monthly volume terms. It was around 250 kgs. 250 kg. Yeah. Yeah. Now with this new facility, what is the average coming for a month? Any incremental which has come up? In this quarter, we are expecting that it will grow up by 20-30%. We will be going up. It will be 350 kg or something. Let's see as the quarter is going on. So we are expecting that in these 2 to 4 quarters, the quantity will grow up gradually. Yes. Okay, so you're saying 25 to 30% increase in volume is expected now. Yeah. From now onwards itself in the new facility, right? So yeah, 100%. We are first 2 months were too little bit. We were changing the facility from old to new. Some employees were hiring in this September quarter. We were hiring the employee designer, and we were getting set up in the facility. But from last October 1st, we were very set up to take this advantage. So October, November, December, let's see this quarter we are utilizing it properly, and we'll get the benefit of this. Okay. And the revenue which is increased on quarter-on-quarter basis, is it an element of gold price increase also in this, or it is majorly volume driven? Gold price तो ज़्यादा increase नहीं हुआ है. You can see that stably they 1-2,000 यहाँ वहाँ last quarter से भी. तो pricing का इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अपना quantity में ही increase हुआ है. So I don't have the numbers of the quantity, but I can provide you. So ये gold prices का तो you can see last 2-3 quarter से 8-60 या 2-3% year and there चल रहा है, या 5% भी नहीं, 2-3% ज़्यादा यहाँ से यहाँ चल रहा है. तो प्राइसिंग का इतना ज़्यादा नहीं है. क्वांटिटी वी हैव इम्प्रूव, मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटीज इम्प्रूव. जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो अभी नया लाया है, सारा जो मशीनरीज लाए उससे हमारा क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन टाइम भी घट रहा है. तो ये ज़्यादा हमारा है. Understood. And last question with regards to margin, sir. Abhi is quarter, I think, because of new facility and changeover, it would have impacted. Abhi next couple of quarters may we'll go back to our old margin of around 5%. Is it expected, right? 100% भी ये फैसिलिटी जो 2 महीने का हमारा जो था, शिफ्टिंग भी था, जो लास्ट क्वार्टर में हमको इम्पैक्ट हुआ, जो रेंट वाइज या पावर वाइज भी जो मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, तो कारीगर भी हायर हो रहे थे डे बाई डे, तो सारा अभी फिल्डअप हो गया है. और ये 2 क्वार्टर में आई थिंक वी विल गोइंग बैक टू गुड नंबर्स अदर देन फर्स्ट क्वार्टर ऑल्सो. सो लेट्स सी. ओके. और सर हायरिंग परस्पेक्टिव से जो भी हम नंबर्स चाहते थे, आई मीन ऑफ कोर्स हायरिंग आपकी ग्रेजुअली बढ़ेगी. वी हैव रीच्ड टू अ स्टेबलाइज्ड नंबर और स्टिल वी आर हायरिंग मोर पीपल. लास्ट टाइम आल्सो यू वर सेइंग अराउंड 400 to 500 यू हायर. हम तो अभी 2 साल के लिए जो 5,000 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास 400 to 500 एम्प्लॉइज है, तो उसको हम लोग 2 साल के अंदर जो अगर आज जो कैपेसिटी है वो हिसाब से अगर ट्रिपल करना है तो 1500 एम्प्लॉय होना चाहिए. लेकिन वील नॉट नीड दैट 1500 एम्प्लॉय. वील ग्रेजुअली ये 500 को हम 2 साल में 800, 850, 900 तक लेके जाएंगे. जो बाकी के 500 का हमारा लेबर कॉस्ट बचेगा, क्योंकि हमने मशीनरीज नई इन्वेंट डाली है और जो नई मशीनरीज मार्केट में आगे भी आ रही है थोड़ी बहुत, वो हम लोग ऑटोमेशन जो अंदर आ रहा है उससे एम्प्लॉय कॉस्ट अपना बचेगा. तो जो स्पीड से हमारा क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उतनी स्पीड से एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं बढ़ेगा. एम्प्लॉय ज़्यादा नहीं हायर करना पड़ेंगे, पर ग्रेजुअली वी हैव टू हायर 50% ऑफ देम. जो पहले लगता था उससे 50% एम्प्लॉय हमको हायर करने पड़ेंगे. तो हम लोग टारगेट करें 2 साल में ये एम्प्लॉय हम लोग 500 to 800, 850 लेके जाएंगे, जिसके अंदर हम ट्रिपल टर्नओवर कर सके. हमारा 5,000 करोड़ जो हमारा एम है उसको अचीव कर सके. जिसके लिए पहले अगर देखे जाए तो 2-3 साल पहले जब मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो ये 1500-2000 एम्प्लॉय लगते थे. जो आज जो हमने नए कैपेक्स किया है, जो नई मशीनरी डाली है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट हमारा बचेगा. 400-500 एम्प्लॉय हमको कम रखने पड़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. या आई गॉट इट. वन लास्ट थिंग सर, इसमें आपने लास्ट टाइम एक बात बता रहे थे कि आपका वेस्टेज भी इस पर रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. वो हमने जो मशीनरी भी डाली है
और उसका सारा अभी जो हुआ है इस क्वार्टर में आपको हमारा गोल्ड लॉस भी हम लोग मिनिमाइज कम कर रहे हैं। जो नया रिफाइनिंग प्लांट है उसमें रिकवरी भी गोल्ड की बहुत अच्छी होती है। सो ये सारे जो सिनारियो है इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव और एबिटा पैट मार्जिन सारा ये कंसंट्रेशन अब ये 2 क्वार्टर में इसी के ऊपर है। तो इसीलिए हमने इतना कैपेक्स किया मशीनरी का कि गोल्ड लॉस हमारा कम हो जाए ताकि अपना मार्जिन बढ़े। तो मार्जिन जो हम बोल रहे हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ने वाला है, इसका दोनों तरफ कारण है। मैन्युफैक्चरिंग का जो साइकिल है वो भी कम होगा, गोल्ड लॉस में भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। जो मशीनरी आई है उससे जितना हैंड में गोल्ड कम रहता है मशीनरी में ज्यादा रहता है तो गोल्ड लॉस भी कम होता है। और दूसरा पार्ट है कि रनिंग साइकिल भी हम लोग कम करने का जो 70 डेज का सर ने पहले पूछा था जो 30-40 डेज में हम लेके जा रहे हैं। और फाइनेंस कॉस्ट, तीसरा पार्ट जो फाइनेंस कॉस्ट पे हम कॉन्सेंट्रेट करें, जो GML वाला है गोल्ड लोन में भी जा रहे हैं तो उससे फाइनेंस कॉस्ट भी हमारा कम हो। ये सारा जो तीनों कॉम्बिनेशन है दिस विल टेक अस टू अवर अचीवमेंट टारगेट एफिशिएंसी रिलेटेड मार्जिन इंप्रूव होने हैं। ये कितने पीरियड में वी कैन विजुअली सी इन दी P&L, मतलब कितना टाइम लग जाएगा? आई एम श्योर इट विल टेक सम टाइम। एस्टिमेटेडली सर कितने टाइम में इसका इम्पैक्ट मार्जिन में आना शुरू हो जाएगा जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी एफिशिएंसी से जो हमारा आने वाले 2 क्वार्टर में आपको बहुत सारा इम्पैक्ट दिखेगा और आगे के बाकी के 4 क्वार्टर है उसमें भी दिखेगा। टोटल 6 क्वार्टर में सारा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। गोल्ड लॉस वाला इम्प्रूवमेंट तो अभी आ जाएगा, ये 1-2 क्वार्टर में ही शुरू हो जाएगा। जो साइकिल जो इम्प्रूव करना है उसका ग्रेजुअली एवरी क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा। 6 क्वार्टर लगेंगे हमको जो कल इम्प्रूव करना है। गोल्ड लॉस वाला इम्प्रूवमेंट अभी आ जाएगा। कुछ सारे बेनिफिट जो है वो इसी 2 क्वार्टर में दिखने शुरू हो जाएंगे। जो फाइनेंस कॉस्ट है वो ये क्वार्टर में 2 क्वार्टर में ऑलरेडी दिखेंगे, इस क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर में। जो रनिंग साइकिल है उसका थोड़ा 5 to 6 क्वार्टर लगेगा। तो एक मिक्स एंड मैच है, बेनिफिट हमको दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सारे जो तीनों साइकिल है इसको मिक्स मैच करके हम लोग विल अचीव द टारगेट। So, sir, in nutshell, considering all this, is it possible we, increase our margin and it may go more than 5% also in a net basis? I will not talk about the percentage and numbers. Maybe knowing I am not allowed to that. But जो हमने सिनारियो मैंने बताया है, जो सारा सिनारियो जो नई फैसिलिटी हमारे पास आई है, जो एक एडवांटेज है हमारे लिए, जो मशीनरीज हमारे आई है, तो ये सब सारा हमको हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने के लिए। So I think 1 or 2 quarters will be best in all the things, turnover wise and margin wise and all. So let's hope for the best. Understood. Thank you so much. Thank you. The next question is from the line of Harshal Shetia from Om Fund Advisors LLP. Please go ahead. Hi sir. Sir, अपना कितना रेवेन्यू ये लार्ज कॉर्पोरेट से आता है, जैसे कि मलाबार कल्याण हो गया, टोटल परसेंटेज और रेवेन्यू कितना रहता है? मे बी 65-68% और समथिंग। अच्छा, और बाकी सब छोटे छोटे प्लेयर्स से आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे स्टोर्स को, जहाँ पे हम एज ए मैन्युफैक्चर छोटे स्टोर्स को हम लोग सर्विस नहीं दे पाते हैं, क्रेडिट नहीं दे पाते हैं और स्मॉल क्वांटिटी हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते, तो दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर हु डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट इन दैट रिटेलर्स स्मॉल रिटेलर्स। अच्छा, तो उसमें हमारा जो प्राइसिंग रहता है वो फिक्स रहता है, जो अभी 300 to 500 ग्राम्स पर गोल्ड चार्ज करते हैं वैसे ही रहता है? या डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट सिनारियो है, कॉर्पोरेट्स का कैसा परचेज, डिस्ट्रीब्यूटर का कैसा परचेज है। थोड़ा बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर को हमको देना पड़ता है क्योंकि दे हैव टू सेल दैट इन्वेंट्री अगेन टू द रिटेलर। वी आर so some little bit benefit we have to give to the distributor, but प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, कैसा प्रोडक्ट है, कैसा उसका रिक्वायरमेंट्स है, कितना क्वांटिटी, वो हिसाब से प्राइसिंग। अच्छा, ओके, Thank you. The next question is from the line of Rahil Shah from Crown Capital. Please go ahead. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। ये आपने 5,000 करोड़ का टारगेट जो बोला है इनटू 2.5 years का, तो इसके साथ आपका कोई पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन टारगेट भी आपने रखा है? शेयर दैट। आई विल नॉट टॉक इनटू द परसेंटेज, लेकिन हम जो हमारे लास्ट क्वार्टर भी फर्स्ट क्वार्टर का जो आया था और उस भी अच्छा मार्जिन था, तो उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट अच्छा आएगा। जो अभी मैंने पहले के कॉल में जिसने आंसर क्वेश्चन सारे सिनारियो मैंने बताए थे,
फाइनेंस कॉस्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं. प्रेफरेंशियल राउंड हुआ है तो ह्यूज फंड हमारे पास आ रहा है, तो इन्वेंट्री फास्ट बनेगी, इन्वेंट्री फास्ट जनरेट होगी, तो रनिंग साइकिल भी हम लोग डिक्रीज करेंगे, पेमेंट साइकिल भी डिक्रीज करेंगे. सारे कॉस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं. तो आई थिंक इट विल हेल्प टू ग्रो अवर मार्जिन बाय गुड नंबर्स. बट आई विल नॉट टॉक अबाउट द परसेंटेज और नंबर्स, बट आई थिंक इट विल ग्रो गुड. अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है. एंड ये जस्ट कंफर्म करना था, यू सेड इन्वेंट्री डेज 35-40 डेज का टारगेट रखा है हमने, राइट? ये कितने टाइम में, इन कब तक का? आई थिंक ये 3 to 4 क्वार्टर्स में हम लोग देख सकते हैं. 3 to 4 quarters. अच्छा, ठीक है. ओके, थैंक यू. Thank you. Ladies and gentlemen, we will take that as the last question. I would now like to hand the conference over to Mr. Gopal Chandak for closing comments. Over to you, sir. Thank you. Thank you on behalf of, thank you everyone for joining the conference call of Sky Gold Limited. If you have any query, you can write us at kirin@kirinadvisors.com. Once more, thank you everyone for joining the conference. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you so much. Thank you all of you, my investors and shareholders. Happy Diwali and happy Dhanteras to all of you. Thank you.